नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आ गए हैं कोवेंट्री में, और कोवेंट्री से हम आज जाने वाले हैं वॉरविक कैसल को। हमारा सफ़र शुरू होता है कोवेंट्री के ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम से, जहाँ से हम बस पकड़ेंगे वॉरविक कैसल के लिए। अभी सुबह के करीब करीब 10:30 बज रहे हैं, और मैंने वॉरविक कैसल की टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर ली थी दोस्तों। दोस्तों, वॉरविक कैसल की जो टिकट होती है वो करीब करीब 39 पाउंड्स पड़ती है पर डे, अगर आपको वन डे टूर चाहिए। और अगर आपको लाइक कंबाइंड टिकट अगर आप लेते हैं, जैसे कि अगर वॉरविक कैसल और द सी लाइफ बर्मिंघम में जो है नेशनल सी लाइफ, तो वो कंबाइंड टिकट आपको 45 पाउंड्स में मिल जाता है। तो मुझे वो वर्थ इट लगा। मैं दोस्तों आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप भी ये टिकट बाय कर सकते हैं। इट वाज़ वेरी वर्थ इट, लाइक क्योंकि अगर आप अलग अलग जाएंगे तो वॉरविक कैसल का अलग से लाइक ऑन वीकेंड्स 39 पाउंड लगता है, और नेशनल सी लाइफ जो होता है वो 27 पाउंड्स लगता है दोस्तों, अगर आप अलग अलग से अगर इसको बुकिंग कराते हैं। तो कंबाइंड टिकट में बहुत ज़्यादा पैसा सेव हो जाएंगे। 45 पाउंड्स में आपको दोनों लोकेशंस आपको कवर हो जाएंगे। और अगर आप एनुअल पास लेना चाहते हैं वॉरविक का, तो वो 49 पाउंड्स में सिल्वर पास आता है दोस्तों, तो जिसमें कि आपको पूरा साल का कवरेज मिलेगा फ्रॉम द डे यू बुक। और उसमें आप कभी भी जा सकते हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि कुछ मंथ में आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि इस मंथ में कौन कौन से डेज़ में आप अलाउड नहीं है। और एक गोल्डन पास होता है दोस्तों, जो एनुअल जो वो भी एनुअल पास होता है, बट उसमें आपको मतलब लिमिट जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम होते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं। हम बस में हॉप इन करते हैं दोस्तों कोवेंट्री से, और हम यहाँ पर ही आते हैं वॉरविक कैसल। जो टिकट है वो लाइक जो बस का जो टिकट है वो दोस्तों हम आ चुके हैं आज वॉरविक और कैसल। हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे और पीछे देख रहे हैं, ये है दोस्तों यहाँ की एंट्री गेट। यहाँ एंट्री गेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कार पार्किंग दी गई है। चलिए देखते हैं आगे कार पार्किंग की क्या टाइमिंग है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 10 पाउंड्स लिखा हुआ है दोस्तों। कार पार्किंग है, आप यहाँ पर ही कार पार्क कर सकते हैं। अगर आप टिकट्स लेके आते हैं दोस्तों, तो अगर आप डेली पास एक होता है, एक ईयरली पास होता है, तो शायद ईयरली पास में वो जो गोल्ड वाला रहता है, गोल्ड पास, उसमें कार पार्किंग इंक्लूडेड रहता है। चलिए देखते हैं। ये दिख रहा है मेन एंट्रेंस, इससे एंट्री करते हैं, देखेंगे आगे क्या है। दोस्तों ये मेन एंट्रेंस। यहाँ से अगर मेन एंटर करते हैं तो यहाँ पर ही ये पूरा यहाँ का नक्शा बनाया गया है, कैसे कैसे करना है। द कैसल डंजन्स। ये डंजन्स का टिकट दोस्तों अलग से होता है, ये आप यहाँ पर स्कैन करके बाई कर सकते हैं। ये डंजन्स का टिकट आई थिंक 10 पाउंड्स होता है, 10 ब्रिटिश पाउंड। और अगर आप वो पास लेके आते हैं इसके वेबसाइट से, तो ऑफर में 6 पाउंड्स में मिलता है। दोस्तों आई थिंक हम लोग खड़े हैं मेन एंट्रेंस की ओर। अब यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, ये मेन ग्राउंड। देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे क्या है। दोस्तों यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट भी आप खरीद सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ टिकट का प्राइस कितना है वैसे। यहाँ पर ही लिखा गया है कि 40% ऑफ अगर आप 2 टिकट्स कंबाइन करके लेते हैं। तो दोस्तों मैंने भी ऐसे ऑनलाइन टिकट करवाया था, तो आप ऑनलाइन टिकट करवा सकते हैं। यहाँ पर खाने वाने का, कॉफ़ी वगैरह का, स्नैक्स का इंतजाम किया गया है। सब चीज़ के प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं। टॉयलेट भी है दोस्तों यहाँ पर ही। आई डोंट नो, ये भी शायद अलग एंट्रेंस है। बैग सर्च। दोस्तों कैसल में एंट्रेंस का ये मेन जगह है। यहाँ कुछ गिफ्ट्स के सेक्शन है, तो यहाँ पर ही बैग चेकिंग होगा। देखते हैं, बैग चेकिंग करते हैं यहाँ पर ही।
यहाँ से मेन एंट्रेंस है। सो आई थिंक दोनों साइड से हो रहा है बैग चेकिंग। सो दोस्तों हम आगे आ गए हैं, यहाँ पर ही बैग चेकिंग हो रहा था। बैग चेकिंग करा के हम लोग आगे फिर से क्यू में आ गए हैं। सो यहाँ पर ही दोस्तों बैग चेकिंग हो रहा है। बैग चेकिंग होने के बाद हम आगे चलेंगे। ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस। सो दोस्तों यहाँ पर ही मुझे ये मिल गया है एंट्री का कुछ एक गाइड। सो आप जैसे यहाँ से एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर ये गाइड मिलता है। आप इस गाइड की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ये है बड़ा सा मेन कैसल। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो दीवार है, थोड़ा सा धूप ज़्यादा आ रही है, अभी दिख नहीं रही है। यहाँ से वो एंट्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने देखा मेन एंट्री। यहाँ पर ही बच्चों के खेलने का यहाँ पर ही है। तो दोस्तों जैसे कि पता है ये सिर्फ कैसल ही नहीं है, मतलब ये मतलब एक हॉलीडे डेस्टिनेशन की तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ही लोग आते हैं अपने फैमिली बच्चों के साथ। सो यहाँ पर एंजॉय करते हैं टाइम को। हर वीकेंड में यहाँ काफी भीड़ रहती है। सो अभी अगस्त का टाइम चल रहा है, तो अभी यहाँ पर ही समर वाला टाइम चलता है, तो यहाँ पर ही लोग काफी मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो चलिए देखते हैं आगे क्या सीन है। यहाँ से तो कुछ साउंड आ रहा है। कहा जाता है यहाँ पर लाइव इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, लाइव शो वगैरह होते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। ओके यहाँ पर कुछ तो ड्रैगन वाला साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं। अगर इसमें अगर लोग चढ़ेंगे तो आवाज आएंगे। हर डायनासोर कैसे आवाज करता है। ये सही चीज है बच्चों को खेलने के लिए। चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ये इस तरह का आवाज कर रहा है, काफी मजेदार है। सो दोस्तों ये है मेन कैसल। हमने यहाँ से एंट्री की। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो ये पूरा पार्क वाला एरिया है, सो काफी बड़ा है दोस्तों। गेट लॉस्ट, ये आई थिंक कुछ तो है भूल भुलैया टाइप्स। ये बड़ा सा कैसल। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। वो ये देखिए ये बड़ा मजेदार है। यहाँ पर लोग जो पनिशमेंट मिलती थी, ये देखिए ये पहले जमाने का है। इस तरह से लोगों का सर कलम किया जाता था यहाँ पर। काफी सही है दोस्तों। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं तो आपको इस टाइप का नज़ारा आपको देखने को मिला होगा। इस टाइप के कैसल्स, इस टाइप के काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। हमारे इंडिया में भी जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे आगरा फोर्ट वगैरह आपने देखा होगा, काफी बड़े बड़े होते हैं। ये भी कुछ उसी टाइप का है, बट देखते हैं क्या बचा है क्या नहीं बचा है, या फिर टूट गया है सब कुछ। देखते हैं। ऐसे मैंने YouTube में वीडियो देखा था, तो उसमें दिखाया गया था यहाँ पर कुछ लाइव शोज वगैरह भी होते हैं, जिसमें पूरा हेनरी सेकंड के टाइम के सारे चीजों को रिक्रिएट किया गया है। सो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। सो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम यूके में घूमने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को सारे कवर करेंगे हमारे इस चैनल में। पूरा गाइडेड टूर होने वाला है दोस्तों, जैसे मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि सारे इन लोकेशंस को जाने में क्या कैसे जाना है, और इन सब की जो बैकग्राउंड फैक्ट्स है, हिस्ट्री है, सारी चीज़ मैं अपने वीडियो में बताऊँ। ये देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ऊंची इमारत टाइप की बना हुआ है, यहाँ देखते हैं। सो काफी शानदार है दोस्तों। थैंक यू। देखिए दोस्तों मेन एंट्रेंस है ये। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो विंटर फॉल जैसा है, वैसा ही कैसल लग रहा है।
ओके, सो ये है दोस्तों मेन वाला सेक्शन। हाँ, यहाँ कुछ तो चल रहा है। कोर्टयार्ड शॉप, यहाँ क्या हर जगह छोटी छोटी शॉप्स है दोस्तों। एंटर हियर ऑल द, ये सीनर द डंजन्स। अच्छा, ये है दोस्तों द डंजन्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले जमाने में जो जेल हुआ करती थी, कैसे इन कैसल्स के जेल हुआ थे, कैसे प्रोसिक्यूशन किया जाता था, वो सारा चीज आप इस डंजन्स में जाके देखते हो। ये थोड़ा सा हॉरिफिक है, इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं 10 पाउंड्स। बट अगर आपने वो कंबाइन टिकट लिया है तो ये ऑफर में 6 पाउंड से मिल जाता है। तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मैंने ये टिकट नहीं लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्टर है दोस्तों, देखते हैं इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कुछ, चलिए जल्दी से सुनते हैं। Because the fog, he decides he's going to divide his men into, send them to a pincer movement, find the English army, begin the battle. They divide, they gallop, they find, and the battle commences. According to records, even by medieval standards, the next 2.5 hours was particularly vile and bloody fighting. Bows, arrows, spears, javelins, death, destruction, power. Which Neville is jumping up and down going, yes! सो दोस्तों यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्टर बताता है कि वॉरविक कैसल की जो हिस्ट्री है काफ़ी फैसिनेटिंग है और ये इंग्लैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिवल कैसल में से एक है। इस कैसल की कहानी जो है लाइक करीब करीब 1000 साल पुरानी है और इसे कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स और पर्सनालिटीज लाइक देखे हैं। तो वॉरविक कैसल का जो शुरुआत है लाइक 1068 में हुआ था, जब विलियम द कॉन्करर ने ये कैसल बनवाया था। विलियम ने लाइक 1066 के करीब में लाइक इंग्लैंड जीता था और अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कैसल्स बनाए थे। वॉरविक कैसल को उन्होंने एक वुडन टाइप का स्ट्रक्चर पहले दिया था, फिर बाद में धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करके ये पूरे मतलब स्टोन स्ट्रक्चर देके इसको और ज़्यादा मजबूत बनाया गया और ये एक स्ट्रैटेजिक डिफेंसिव पोजीशन के लिए भी यूज होता था। सो दोस्तों करीब करीब 12th सेंचुरी के दौरान ये वुडन कैसल था जो स्टोन से रिप्लेस कर दिया गया था और ये बहुत ही मजबूत फोर्ट्रेस की तरह देखा जाता था। ये उस समय में जब इंग्लैंड में काफ़ी सारे कैसल स्टोन में कन्वर्ट किए जा रहे थे ताकि उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाए जा सके, वॉरविक कैसल में स्टोन कीप और फोर्टिफाइड वॉल्स बनाए गए उसी समय में, जो इसको और भी पावरफुल बना दिया। फिर 12th सेंचुरी में जब लाइक वॉरविक कैसल को बॉचकैप फैमिली के कंट्रोल में आ गया। ये फैमिली इंग्लैंड की मोस्ट पावरफुल नोबल फैमिलीज में से एक थी। विलियम द बॉचकैप जो 9th अर्ल ऑफ वॉरविक थे, उन्होंने कैसल की डिफेंस को काफ़ी एक्सपेंड किया। 14th सेंचुरी में सीजर टावर और गायस टावर बनाया गया जो आज भी कैसल की आइकॉनिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। फिर आया रिचर्ड द बॉचकैप, द 13th अर्ल ऑफ वॉरविक, द कैसल के सबसे प्रोमिनेंट ओनर में से एक थे। उन्होंने कैसल को एक कल्चरल सेंट्रल बनाया जहां जोस्ट और टूर्नामेंट्स होस्ट किए जाते थे। उनके इन्फ्लुएंस इतना था कि उन्होंने अपने टाइम में इंग्लैंड के पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। सो दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं ग्रेट हॉल की तरफ। सो जैसे ही आप वहाँ से एंट्रेंस से करते हैं तो ये सबसे पहला डेस्टिनेशन है। सो ये ग्रेट हॉल है। सो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ का नज़ारा। सो दोस्तों जैसा कि देख पा रहा हूँ कि ये एक बड़ा सा हॉल है। सो इसे आई थिंक पहले बैठक खाना के रूप में यूज़ किया जाता था जब कोई भी गेस्ट वगैरह आते थे। सो एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ डाइनिंग वगैरह लगता होगा, बट अभी इसको एज अ शोकेस के लिए इस हॉल को यूज़ किया जाता है। सो आगे हमें एक गाइड भी मिलेंगे जो हमें इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पर ये बेसिकली लाइक वॉरविक से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट यहाँ पर ये आपको मोस्टली आर्टिलरीज और
जो आर्मर्स वगैरह ही ज़्यादा दिखेंगे, जो बताते हैं कि जो एक्चुअली बताना चाहते हैं रिच हिस्ट्री के बारे में ब्रिटिश का, लाइक किस तरह रोमन एंड मेडिवल पीरियड्स में जो लाइक वॉरफेयर्स हुए थे उस टाइम में जो आर्मर्स वगैरह यूज़ होते थे वो किस टाइप के थे। सो इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बट एक्चुअल में इस हॉल का यूज़ लाइक बेसिकली गैदरिंग के लिए हुआ करता था, पार्टीज के लिए हुआ करता था, डाइनिंग के लिए हुआ करता था। तो आगे हमें ये गाइड बताते हैं, चलिए सुनते हैं उनकी Going जुबानी। back to the 14th century. That was a very different building, mainly built out of wood with no glass in the windows, just thin strips of wall called lancets. It's much darker, much colder, and much draftier. So to stay warm, you have a huge fire pit in the centre of the room and a hole in the thatched roof to act as your chimney. That great hall, for most of the castle, fell into ruin. The whole place was nearly completely demolished. Thankfully, we were rebuilt by the Neville family. They would live here from 1604 all the way until 1978, and they started to modernise. Their Great Hall, back in the 1670s, looked like this. Much prettier than what we have today. Italian, or Renaissance, white plastered walls and ceiling, black and white stone flooring. I love it. Annoyingly, the Grevilles decided to remodel. By the 1800s, people are obsessed with Gothic and medieval. So they thought, if you own a medieval castle, you should have a medieval Great Hall, which I hate. This is the room back in the 1830s. It's like the backdrop to a school play. Not much going on. They've installed the flooring beneath our feet, the red and white Italian marble, but the ceiling was much, much lower. Now the reason that this room looks different to this one So दोस्तों ये रेड ड्राइंग रूम क्या है? So this is our red drawing room, for obvious reasons. It is also the antechamber and the transitioning room, because the Grevilles had a problem. You have just stepped out of the biggest room in the castle. They were worried you might be disappointed, so they put you in here, close the doors, and make you wait for up to an hour. I've only got 22 minutes, but Pastor Shine, he said he was related to the medieval Earls of Warwick, the Beecham family. He did not own the castle, but luckily for him, the wound turned infected and gangrenous. After a whole month of searing and agonising pain, he finally succumbed to death. But they say he never left the castle. Every night, when the clock strikes 12, his ghost will step out that painting frame and wander up and down corridors, keeping a close eye on the family home. There's only one problem. The ghost sightings only began in the 1950s, which coincidentally is the same time we needed more money. But it does help to pass the time. At this point, you've forgotten all about the Great Hall. Those doors would swing open and you were invited through the depths. So please make your way into the ballroom. So this is our cedar drawing room, named after cedarwood panels installed back in the 1670s. Unfortunately, we discovered a couple of months ago some very large cracks in the ceiling. The original 17th century ceiling
is collapsing on top of the 18th century one. So that's our next bit of restoration. Now this would be the ballroom, and everything is covered in gold. 18-carat gold leaf. The painting frames, the light fittings, and the ceiling. That was done by Golden George Greville. He had a big spending problem, and he put his family into £13 million worth of debt. They are bankrupt. So to pay off that debt, they opened for the public in 1815. But they carry on partying, so their debts spiral out of control. Now another way of showing off how rich you are is with electricity. Back in 1895, we installed these chandeliers, and there were fairy lights strung between them. They were powered by the mill, the massive water wheel down by the river. Originally, it was for grinding corn flour, then for pumping water up to the main house, but in 1894, it was converted to a hydroelectric generator that wasn't very good. The lights were described as bright as a dim candle, and they had a very nasty side effect of exploding. You'd have to have a servant armed with... Now, one of the most frequently asked questions that we get in this room is about that secret door in the corner behind the paintings. Originally, this was the medieval Earl's bedroom. Behind that secret door is the only remaining part of the old 14th century room. Now, the original Great Hall stretched as far as the ballroom, and the smelly peasants sleeping on the floor in there. If the Earl wants a private space, he would go into that corner and climb up a stone spiral staircase all the way up to the roof to a private tower called a solar. He could watch the sunset and read a book. Annoyingly, the Grevilles knocked down that stone spiral staircase. So this is all that remains. So now we are in the men's room. You can imagine a billiard table in the centre, people in the corners playing poker, smoking cigars, drinking brandy, and talking about war. The English Civil War. That's where most of the paintings come from. During that time, the owner of the castle was this man here, Robert Greville, the cousin to Fulk Greville. He would wear that armour into battle, but not for long. Only a few months into the war, in March of 1643, Robert was attacking Lichfield to show their love and their marriage, with him staring lovingly into her eyes. Now they've been put apart, so she's underneath him, and he's staring lovingly into the eyes of Antonia. So we are now royalists. 1695, King William III joins us for dinner. He would be exactly where we are now, getting very drunk. You do not want a drunk king falling up the stairs, going to find a bedroom. So your best bedroom is conveniently built next door. Now, we have no idea if any monarch has ever slept in here, but to make this room fit for a king or queen, the family have decorated it with this blue tapestry. It is 400 years old,
and it didn't fit. It was made for the London home of Warwick House. So when they moved it here, they've taken out their scissors and chopped it up. The worst example of the damage is that top corner of above the bed. So the bed is covering the worst of the stitching. Now that is Queen Anne's deathbed. Queen Anne, pictured above the fireplace, reigned from 1702 to 1714. It is argued she had the worst reign of any English monarch. She lost 17 children. None of them made it to the age of 12. In her depression, the doctors prescribed comfort eating, which made everything worse. She was morbidly obese, so large that she couldn't walk. She was carried on a throne by her own servants for her coronation, and at the age of 49, she suffered a stroke. She died in that bed in Kensington Palace. We were given the bed as a gift from King George III. He neglected to tell us that the Queen died in it. We had no idea until a decade ago, doing a bit of research. On a much brighter note, we also have a tiny set of chairs at the back. That is not for children. It is a very rare example of sample furniture. About 200 or 300 years ago, the Earl of Warwick would never go to a shop. He's far too important. So the shop must come to him. They bring tiny versions of their work dotted about his house. If he likes them, he orders the full-sized set to be custom made and delivered later. Might be haunting the bed, we don't know. I don't think it was clean the bed sheets. The name goes forgets a little girl in white. That one has it. There's a story to go with that big sword in the next room. So the big sword in there, Queen Elizabeth II came here in 1996 to see the opening of the Kingmaker. We gave her the sword, and she left it here. Just a regular visit. That's a use for it. I should probably acknowledge the King in the room as well. Henry VIII. We don't like him. He did own the castle, but he hated it because of one of its previous owners, Richard III, mortal enemy to his dad, Henry Tudor. So Henry VIII came here twice. Once in 1511 with his first wife, and again 30 years later in 1541 with his fifth wife. Bear in mind, she was 30 years younger than he was. So we don't like him. But we love her. In the centre of the wall is Frances Evelyn Daisy Maynard, said to be the most beautiful woman of her time and the wealthiest. She inherited half of Essex. Everyone wanted to marry her, and one man wrote that famous song, Daisy, Daisy, give me your answer do. Queen Victoria wanted her to marry her son, Prince Leopold. So the plan is they would meet at a party in 1880, dance and fall in love. It backfired because she was already in love with Leopold's best friend, Francis Greville. They got married the very next year. A huge ceremony in Westminster Abbey. The Queen was there, Leopold was the best man, and to prove that there were no hard feelings, they named their firstborn son Leopold in his honour. They inherit the castle and they move in 1894, and she hates it. In her own words, Daisy called this a dry and drafty museum. So this was her private writing room. It is styled on her favourite time, the French Revolution. Her hero and role model was Marie Antoinette. So that is Marie Antoinette's original clock. And all the blue silk came from Lyon in France. A year after moving in 1895, Daisy would host the Great Powder Ball.
400 guests who look like this. This is a photograph of Daisy dressed as Marie Antoinette. Her ball gown was embroidered in gold and studded in diamonds. She spent £176,000 on food, drink, and cigars in a single evening, just adding to all the family debt. Someone needs to pay for that debt, so her grandson, Charles Greville, does something no Earl has ever done before. He gets a job. And the best job to have is a Hollywood movie star. So there he is on my left, alongside David Niven and Errol Flynn in the 1938 blockbuster, The Dawn Patrol. He went by the stage name of Michael Brooke, but people call him the Duke of Hollywood. Much like his grandmother Daisy, he's very good at partying. He's just not very good at acting. Never had only a third of the size of our original collection. And that resulted in huge art protests. Castle is besieged in art battle. There is a 72-hour art protest outside the castle walls. Everyone has turned against David, and he had no other option. In 1978, we had Sell and Be Damned. The castle was up on the market for £1.5 million. Nothing. It's a bargain. But there's a catch. You are buying everything. You get the building, what's left of the artwork, armor. सो दोस्तों ये था पूरा गाइडेड टूर, लाइक जिसमें कि वो लाइक गाइड हमें पूरा एक्सप्लेन करता है हर हर जो चेम्बर्स है ग्रेट हॉल से लेकर जो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी रूम्स थे उसके बारे में, पूरा हिस्ट्री के बारे में बताता है। सो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन सकते हैं। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता है दोस्तों, जो हमें बैक इन टाइम हिस्ट्री में लेके जाता है, जब ये वॉरविक कैसल उस समय बना था और उस समय यहाँ पर ही रहते थे लोग। सो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो लाइक एक बाईपास था, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे वापस से हम लोग वो ग्रेट हॉल की तरफ जाएंगे इस रास्ते से, और फिर वहाँ से एक दूसरा रूम है वो भी हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और मैं आशा करता हूँ कि मैं एक पार्ट बनाऊँगा इसका। सो आपको ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और आप इस वीडियो को एंजॉय कर किए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो हमें इस तरह से आप सभी से ये मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियोस लाने के लिए, ताकि आप सभी तक लाइक पूरी हिस्ट्री के बारे में बता सकूँ, लाइक मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ यूके में आप सभी तक लेके आ सकूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक छोटा सा चर्च है दोस्तों। सो हम यहाँ एंटर करते हैं, देखते हैं ये चर्च कैसा है। यहाँ पर ही छोटा सा चर्च है, इस वॉरविक कैसल के अंदर ही बनाया गया है। ये आई थिंक चर्च है।